नमस्कार। गेसु संवाद के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। गेसुआइट्स अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ जल्दी-जल्दी जॉइन कीजिए। मैं मॉडरेटर डॉक्टर आज्ञा दुबे मिश्रा 94 इलेक्ट्रॉनिक्स बैच की पास आउट आज संवाद सेशन में एक बहुत अच्छी शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू हूँ। वर्तमान में जो पोलैरिस सर्विसेज में डायरेक्टर हैं, कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेटेजी में, और ना केवल वो एक मार्केटिंग के साथ ग्लोबल लीडर हैं, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल लीडर हैं, और ऐसी शख्सियत जिनके विचारों में ऊर्जा भरी है और आवाज में व्यक्तित्व का ठहराव और मुस्कुराहट में हर समस्या का समाधान। ऐसी शख्सियत, वर्सेटाइल पर्सनालिटी, जो ना केवल इंजीनियर, मार्केटर, लॉयर और कई एनजीओ ग्रुप से डिफरेंट विधाओं में जुड़ी हुई आज हमारे बीच में 92 पास आउट इलेक्ट्रॉनिक्स बैच की श्रद्धा शुक्ला पंत मैम। हार्दिक अभिनंदन मैम। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज्ञा। Good morning, good afternoon, and good evening to all the Guesuites all over the world who have joined us. मेरा सौभाग्य है आज्ञा कि ये प्लेटफॉर्म पहले तो है जिसके द्वारा हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, and I think I need to congratulate the entire Samvad team for such a wonderful platform led by Puneet sir and the team behind it, who has been making all that efforts to connect so many of us all across. And of course, we never thought about it when we were in the college in 92, 94, for sure. We never knew that we would get to meet people all over. We are absolutely fortunate, मैम। आपने समय निकाला और स्वीकार किया कि आप संवाद में हमारे उन सभी साथियों को जोड़े, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई है कि संवाद एक हमारा घर हो गया है गेसु का, जो सब लोग डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं। कोविड में ऐसा हुआ था कि कई लोगों के बिजनेस डाउन हुए हैं, तो उन्हें आज वो नए सिरे से स्टार्टअप और बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसी शख्सियत की बहुत जरूरत है जो ग्लोबली अपने आप को रेजोनेट कर रही है। वो आपकी जो चमक है, वो नूर हम लोगों को भी मिले। तो थैंक यू सो मच, आप आए हो। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि आज आप जिस मुकाम पर हैं वहां आप किस तरीके का कार्य कर रही हैं और कैसा महसूस कर रही हैं? पहले तो आज्ञा, तुमने तो बहुत सारी चीजें कही, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कई बार, बट आई डोंट नो वेदर आई फिट इनटू सच बिग शूज दैट यू हैव प्रेजेंटेड द ऑडियंस विद, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट and be very candid with your questions that you are going to ask. और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसका मतलब something which can resonate with the people, which I can communicate, it would be my effort. So I think तुमने पूछा कि जो मुकाम कहाँ, I feel want to start with हम सभी लोग, और क्योंकि गेसुआइट हैं, हम लोग एक बहुत विशेष जगह से आते हैं, एंड जो उज्जैन है वो यूज्ड टू बी द एपिसेंटर ऑफ आवर सिविलाइजेशन वंस अपॉन अ टाइम, एंड शायद उसकी हवा में, उसकी रूह में, उस जगह में कुछ खासियत है कि once you study there, whether it is Kalidas influence or Vikramaditya influence, or of course the biggest influence of Mahakal being centered there, I think we are blessed with all of it. And all the Gesuites, I would say, are blessed with such a wonderful place to be in, जो अपने आप में एक बहुत ऊर्जावान और बड़ा प्रभावशाली सा जगह है, जहाँ से हम कितने भी समय, अगर बाहर के भी थे तो 4 साल, जो वहाँ के उनके लिए कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन, बट आई थिंक वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट. So of course that is I would say the starting point of it. Yeah. तो आज आप जैसे हमने अपना थीम रखा है कि यू आर रेजोनेटिंग टू ग्लोबल फ्रीक्वेंसी, ये मुकाम बहुत हासिल करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जिस वातावरण से आप पढ़कर इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो मैं अभी आप जो वर्तमान में है, जो आप
पोलरिस में हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा-सा बताइए। उसके बाद फिर हम आपकी पूरी जर्नी को ज़िक्र करेंगे। तो अभी Sure, आप sure, किस sure. नेचर के? हाँ। The what I have been doing is that there are different, I would say, domains on which I had worked, but predominantly on the business side, handling the P&L. So that's where I still work on, providing the strategy to generate the revenue, to generate the growth. So that is one part that I work on. Second part that I work on very strongly is on the digitization. And when we say digitization, I think India में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि everyone understands in India what is digitization. But I think the power of digitization in something which is unheard of is something that I look forward for in developing new solutions, new models, entirely very different models that we can work on. And the core of it that we revolve around is the experiences, because even when we say product, हम आईफोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. So that Yeah. rules the world today. So I work on these kind of domains. Yeah. Industry, I am very agnostic to industry. कोई सी भी industry होती है, पर मुझे जो जी। मजा आता है वो टेक्नोलॉजी में आता है, for sure. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो। बट आपके साथ जैसे स्ट्रेटेजी वर्ड भी जुड़ा हुआ है। स्ट्रेटेजी में बहुत सारे विंग्स होती हैं, जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रेटेजीज बिजनेस में लगती हैं। तो Yes. आपका जो कंसल्टेंसी है वो किस? So my strategy, my strategy is on the business side. Okay. That's what I do. I stay away, I would say, from the financial part of it. I'm not the person who can give any advice on that part of it. But on the business side, when I understand the entire, how does the profit flows back to you, I can do the entire life cycle of it, and I can do the customer life cycles. Basically, when they look at the product, or even when they hear about the product, कि ये brand सुना है मैंने कहीं. Let's say, when the Global Desi as a brand सुना है कहीं, but what does it mean, right? So from there, until you get the revenue back to the system, Okay. so that's where I cover the spectrum. ओके ओके। सो मैम, लाइक आप ग्लोबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और इंडियन आपका जैसे जो आपका ब्रॉटअप है, आपकी लर्निंग्स है इंडियन एनवायरनमेंट में हुई हैं, आप कैसे कोप अप करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ में? Okay. देखो, I mean, when no job, first thing I would say is that कोई सा भी काम हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कंट्री का हो, स्टेट का लेवल का काम हो, या आपके सिटी का काम है, they are all important. No one is more important than the other. I mean, अगर आप ग्लोबल काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप कंट्री पे काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, या it is one level down. Of course not. That's not the situation. But what changes is that जब आप country environment में रहते हैं, and I think I'll try and give you a perspective, क्योंकि मैंने country roles भी किए हैं, मैंने regionals भी किए हैं, global भी किए हैं. तो जब आप country में देखते हो, तब आप एक तरह का एग्जीक्यूशन देखते हो, एक तरह की चीज देखते हो कि आपका प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में आपके कस्टमर्स के साथ कैसा हो रहा है. सो I would say it's a bit of the scope. जैसे मैं बताऊं कि I'm just showing you this piece of it. I'm not showing you this much, but I'm just showing you this much, and that's what we see. तो ये perspective रहता है. And India में, touchwood, I would say, with software coming in, the industry has really revolutionized completely. We talk global in India, and we are very fortunate, and I think somewhere we thank that industry as well. But what's more important is that उसमें भी आप क्या करते हो, कि are you just looking at coding this piece, or are you just looking at BPO, you're serving this geography? That is also global for sure, but then are you seeing only that? But I think मेरे लिए ये important था कि आप क्या बनना चाहते हो? Are you a cog in the wheel? एक wheel है, उसमें cog हैं आप.
cog is very Well said. important, otherwise wheel will not turn. That is true. Definitely. But for me, Very true. I wanted to look at कि मैंने काम किया. For example, I'll just give you an example. Let's say मैंने Sony में काम किया, मैंने HP में काम किया. I was doing for my country, yes. But I of course, when I was interacting, there was a global team with whom I would work, and I would figure out, okay, कुछ काम है वो हमको बोल रहे हैं, okay, ये product है, इस product को आपको launch करना in the market. Fair enough, we'll go ahead and launch it. But then I was always mesmerized with this thought कि ये कैसे होता है, क्यों हमें आके बोलते हैं कि आप ये वाला दो. And I also as a marketer, I know, मैंने कई बार बोला होगा कि नहीं मुझे ये वाला product भी चाहिए इंडिया मार्केट में, and I was denied. Yeah. And I was saying क्यों नहीं, तो फिर then they will हमको बताएंगे कि आपकी इकोनॉमी ऐसी है, this is the price point. So I used to always wonder कि उस साइड में क्या होता है. I mean, why can't we be on that side of it? Yeah. So Yeah. if I just जब मुझे बताना चाहा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कंट्रोल पैनल है, and that control Okay. panel is not in the country. That control हाँ. panel resides somewhere else. हाँ. And I was so interested, so curious about कि ये कंट्रोल पैनल में काम कैसे होता है ना. आप AI इंडस्ट्री से, I mean, you have done it, so maybe I'll just give you an example कि there is a robot which is doing repetitive work. Now, do I want to be a part of repetitive work and understand कि artificial intelligence is going to affect me, versus my thought which was that can I be in a part where I program, where I do what are the neurals doing? How do I do that? So I think that was the drive that I said that okay, it is just not about being a part, but I also want to see the control panel. To stand with this kind of I mean environment, I think it is not easy. Continuous homework and self upgradation is required, I think. आप उस पर क्या बोलेंगे? Yeah, so I would say that is, I think, the driving force. I mean, you know कि अच्छा हमको ये करना है. So that is step one. फिर आपको ये समझना पड़ता है कि अच्छा ये जो control panel है इसको चला कौन रहा है? हाँ. There's someone who is doing source. It. Who is that source? So can I influence that source? Then what you prepare. मैं यहाँ रोकना चाहूंगी आपको कि आप वो इन्फ्लुएंस करें या वहां स्ट्राइक करें कि जो चला रहा है वहां आपकी जगह बने. उसके लिए कौन सा फैक्टर है जो आप अपग्रेड करती हैं खुद में या उस पर एक्सरसाइज करती हैं, सेल्फ एक्सरसाइज? पहला चीज तो ये कि you have to be the best in what you're doing currently. Yeah. You cannot get noticed. You cannot get noticed. Let's say with my head office in Paris while I was in Schneider, someone will notice me. No chance. I mean, they've got 150,000 employees and I'm just one amongst them. They're not going to recognize me. So I mean, I need to have to be the best there. And then I would say in today's environment versus pehle wala, there are a lot of opportunities that you get. Sometimes you would be presenting to them, sometimes they will be visiting you. So hota hai. But I think here I would say, how do you prepare? It is the power of thought. It is your power that you bring in. You might bring in a new way of doing business. You might bring in a new technology. I mean, जो भी आप काम करते हो, उसमें हमेशा स्कोप होता है कि आप कुछ करो. Like for example, I was handling a business, I was doing the strategy for it, and one fine day, the French guy who was the MD said that, okay, good, very good strategy, go and implement. And you know, this is a very contrast because I was doing strategy, I was not doing execution piece at that time. But then when that challenge is thrown at you, are you ready to grab that challenge and do it? Mindset. And that thought, that mindset, and of course you work backwards for many things. Like for example, अब तो mobile phone में apps बहुत common सी चीज है. But imagine about 15 years back, 17 years back, when I was working on one of the businesses, it was never heard of. I went back and I said, my customer in my marketplace needs this.
and this is not available in your current solution. So you look outside your industry, you look outside your company, you look outside of many things to scan the environment which is broader and figure out, is there a possibility of me to do something with that? So, I mean, if it was my solution of mobile app, there were no developers for it. So I have to search for developer, go back and search for them. But I think that stood out very, very strongly, that in India, there's someone who did something which is very revolutionizing, which is very different than what the way with businesses we are dealing. Yeah, so I think it's a power of thought. Yeah, power of thought that you have to bring in. And then, it should be impeccable execution. You cannot have जैसे आपने बताया कि सेल्फ अवेयरनेस आप रखेंगे तब हम सोचेंगे कि हाँ इसमें क्या नया लाएं, खुद को अपडेट करेंगे और उसके लिए स्किल्स भी कंटिन्यूस क्या करते रहना, डेवलप किया आपने कुछ ऐसी की कुछ एक्स्ट्रा जो आपने जैसे एमबीए के बाद आप मार्केटिंग में हैं तो कुछ स्ट्रेटेजीज के लिए अगर आप वो बन रहे हैं मतलब एक्सपर्ट हो रहे हैं तो कुछ आपने और भी कोर्सेज किए हैं मैम साथ में या स्किल्स या कुछ इस तरह से? देखिए ऐसा मतलब मेरा ऐसा मानना है, एंड आई नो यू माइट कंप्लीटली डिफर जो मैं बोलने जा रही हूँ क्योंकि आप प्रोफेसर हैं. मैम अभी मैं ना सिपा सला रहा हूँ ये सारे हमारे गेस्ट वाइट साथियों की इस वक्त मैं उनकी तरफ से आपको बोल रही हूँ कि वो चीजें हमारे सामने आ जाएं कि हाँ आप पहुंचे हो जहां तक ना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप बता रहे हो, मैं समझ सकती हूँ. तो इसलिए हमारे साथियों को बताइए कहाँ से आपने ये चीजें डेवलप की हैं, वो रिसोर्सेज जानना चाहती हूँ मैं एक्चुअली. और क्या क्या डेवलप किया आपने? आप मैगजीन्स पढ़ते थे, आप न्यूज देखते थे या आपने कोई कोर्सेज किए या इस चीज को, क्योंकि आप अपनी पहचान बनाना उस सोर्स तक और आपकी बात को वो माने, केवल पहचान हो जाना या आपकी बात को वो मानने लगे ताकि आपके सजेशंस उस क्रिएटिव प्रोडक्ट में जाने लगे. तो इसके लिए तो खुद को बहुत डेवलप होना पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ता है. तो वो तो थोड़ा सा मैं पहले आपको आंसर, पहले मैं अभी अब थोड़ा सा तुमको एक आंसर करूं, उसके पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपकी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा. आई कम बैक टुडे हियर एंड आई से कि भैया कि भाई आई एम अ हॉलीवुड स्टार, you won't believe, right? Obviously not. Yeah. So it is the same thing. No one will believe you unless first there is a reason for them to believe you. There has to be a reason to believe you. Yeah, it has to be. That value proposition that we are talking of has to be very, very strong. और उसके पहले एक स्टेप मैं ये बोलना चाहूंगी कि you have to believe yourself. I mean, जब तक मैं अपने आप को मिरर में देख के नहीं बोल सकती कि man, this is the idea. नोट करने लायक गेस्ट वाइट्स यहाँ पर बहुत एक की फॉर्मूला मैम ने दिया है कि पहले खुद पे भरोसा और खुद की बात पर कॉन्फिडेंस लेना कि हाँ ये ऐसा है और मुझे करना है, और उसका ज्ञान ले लेना कि हाँ इस विषय में अब मुझे इतना ज्ञान है कि अब मैं वहां पर बोल सके. तो वेरी नाइस मैम. Yeah, that is absolutely. और मैं तुमको एक और चीज, very engineering variety I'm going to bring in, and I think that should maybe bring more clarity to the entire thing. ये देख पा रहे हो आप मेरा छोटा सा? हाँ. Are you able to see something? Yeah, wooden box. Yeah. Yes. कितने dimensions? Dimensions currently I think hardly two कितना लग रहा है ये 2.5 है ना? Yeah, but what I just want to know कि as an engineer जब हम measure करते हैं तो कितने dimensions होंगे इस चीज के? Obviously 3 लेंगे हम. Hey, yes, that's what it is, and that's where I differ, and I need to bring a very different perspective. कि हम सबको पता है कि length, breadth, height तो होती ही है हर एक चीज, right? But when you're talking global and when you're even in local, I would say इसका एक और dimension है. Can I just show you? Yeah, inside. Yeah. Inside. So this is the fourth dimension. Absolutely. Now, no one normally thinks of fourth dimension. Right? Yeah. So जब आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, think beyond. Think
कि इसका अंदर वाला डायमेंशन भी है, इसमें अंदर भी तो गहराई है, अंदर भी तो व्हाटएवर लेंथ है, एंड देन व्हेन यू ओपन इट मे बी यू फाइंड समथिंग, लेट्स से ज्वेलरी, नो व्हाटएवर. सो जब आप कोई भी चीज को अप्रोच करते हैं या देखते हैं, उसके बहुत पहलू होते हैं. मेरे को थोड़ा सा करेक्ट कर देना इफ आई गो रॉन्ग ऑन द थोड़ा सा लैंग्वेज में, या व्हाइल आई एम ट्राइंग टू ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो यू आर फ्री टू स्पीक इन एनीथिंग इन एनी हिंदी लैंग्वेज. इंग्लिश में, जब मैं हिंदी में आऊंगी करेक्ट कर देना. आपका कंटेंट है बहुत हैवी. we need it. तो इसीलिए आई थॉट कि मैं इसको शायद एग्जांपल से बताऊं तो इट गेट्स बेटर. तो वो जो जितने पहलू होते हैं ना चीजों के, आप उसको परत दर परत अगर करना शुरू करते हैं, गो डीप, गेट टू द डेप्थ ऑफ इट, दैट्स व्हेन यू रियली फाइंड द पर्ल. जो बोलते हैं ना कि जब तक आपको सी डाइव करके टू फाइंड सम पर्ल्स, और आप तो वहां की हो, पन्ना की हो, तुम तो डायमंड ही डायमंड है तुम्हारे पास, पर उसके लिए भी खदान चाहिए, खोज. नो, यू हैव टू गो डीपर. Similarly, when you are doing any of it, you have to really put your heart, head and hand into it. एक से काम नहीं चलता है, सिर्फ तीनों चीजें चाहिए होती हैं. तब आई एम श्योर यू विल फाइंड लॉट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नॉर्मली डोंट ब्रिंग इन. मैम, जैसे आपका एक्सपर्टाइज दिखाया कि जैसे आपने जो B2B और B2C बिजनेस डोमेन में भी आपका काफी योगदान है. तो अभी हम, क्योंकि अभी इतना हमारा डिजिटाइज हो गया है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की एक हवा है कहना चाहिए इस वक्त. तो पहले जैसा तो अभी सीन मार्केटिंग का भी नहीं रहा है, बहुत चेंज हो रहा है और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है. तो उसमें मुझे लगता है कि कई बार B2B B2C में डायरेक्टली भी कस्टमर तक के लोग अपना करने लगते हैं, और हवा सी आती है, प्रोडक्ट चेंज होता है, फिर चला भी जाता है क्वालिटी वाइज. तो B2B और B2C पे कुछ थोड़ा हाईलाइट करें जो हमारे साथियों को हेल्पफुल रहे. ओके, देखो B2B तो तुम्हारा जो कस्टमर डोमेन है ना वो डिफरेंट होता है. दैट्स हाउ आई थिंक वी बिलीव एज अ मार्केटर कि ये बिजनेस टू बिजनेस है, ये बिजनेस टू कस्टमर है. पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे, एंड आई थिंक आई हैव लर्नड इट विद एक्सपीरियंस. I've learned it. I would have failed many times as that's where I picked up many. कि हम electronics engineers हैं, and there are many people around, which may be chemical or civil or whatever branches that you have. हम ना कई बार चीजों को ऐसा देखते हैं, 0 and 1. This is how we see the things. या तो ये B2B है या ये B2C है. The point is कि कई बार ऐसा नहीं होता है. क्या होता है कि हमने सोचा है कि ये बिजनेस टू बिजनेस है, ये बिजनेस में ही जाएगा, लेकिन यू विल फाइंड समवन यूजिंग इट नेक्स्ट डोर. हमने बनाया नहीं है उसको, हमने बनाया वो B2B के लिए था, लेकिन वो B2C हो गया है. Okay. For example, let me try and pick up some example if I can give. कंप्यूटर्स जब आए थे, कौन लोग कंप्यूटर्स यूज करते थे? इंडस्ट्री में, बिजनेसेस में. दैट्स हाउ वी थॉट द प्रोडक्ट. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं HP में काम करती थी, आई वाज हैंडलिंग एंटरप्राइज. आई वाज हैंडलिंग एंटरप्राइज कस्टमर्स, दैट मींस हाई एंड कस्टमर्स जिनको करना है, राइट? But one fine day, may not be in India, but some part in the world, किसी ने उसको घर पे लाके लगाया और बोला अरे ये कर सकते हैं इससे. तो वही कंप्यूटर है, चीज वही है. It is still B2B. It became B2C. तो वो B2B से B2C ट्रांजिशन हो गया है. दूसरा, I'll give you a reverse example. ये चैलेंजेस चेंज हो जाएंगे ना मैम? चैलेंजेस चेंज हो जाते होंगे. चैलेंजेस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. I'll just answer it in one bit. मैं एक थोड़ा सा रिवर्स एग्जांपल लेके देती हूँ. मैं ये हमने कहा B2B से B2C हो सकता है. सिमिलरली एक रिवर्स एग्जांपल मैं देती हूँ कि Agya Dubey is working in a college and you are there. Right, but you come home and you use the same thing, right? So
You even in an enterprise environment, जब आप enterprise में हो, तब भी you are, I mean, I know organizations are differently aligned, differently organized, लेकिन एक individual जा रहा है, वहाँ human being जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप एक कंज्यूमर हो, उसकी डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस हैं, which you will carry with the brand that you're associated with, and then you can still be, you still carry some amount of C in a B2B environment. So ये जो मतलब जो टाइट बॉक्सेस थे किसी जमाने में, वो थोड़े से ब्लर होने लग गए over a period of time. So that is one thing that I need to do. Now, but whenever you approach from B2B to B2C, yes, there are very salient features of your market and of your consumer, right? Which are very different than, for example, कि if I'm addressing my consumer, हो सकता है कि उसको price sensitivity is very high for him because ये उसका खुद का individual पैसा जा रहा है, right? Versus let's say B2B में है, where an organization will say कि चलो X dollars extra है, कोई बात नहीं है, I will get additional security for my network. I get additional, you know, my domain is safe, my domain is secure, I don't mind paying it, right? तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें ये है कि ये जो salient features हैं, ये आपको पता होना चाहिए, and then with that you address the with your product, with your services, everything. Like for consumer, it is very subjective. It is very subjective क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से salient features हमेशा different होते जाएंगे. तो उनकी स्टडी रखना, वो टाइम टू टाइम भी चेंज होंगे मैम, तो उनको बार-बार. और दूसरा चीज हमको ये मतलब आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि आप सिर्फ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से मत सोचिए, आपको अपने कस्टमर, उसके एनवायरनमेंट, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके इमोशंस से भी सोचिए. मतलब ऑफ कोर्स फंक्शनैलिटी एज एन इंजीनियर हम सब सोचते हैं कि ये फंक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, करेक्ट, वेरी राइट, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. पर आप कहीं ना कहीं जब आप वो डिफरेंट हैट्स पहन के अपने आप को देखते हो ना, एक हैट वो भी लगाइए जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं देखिए, एक्सपीरियंस का देखिए, कस्टमर के इमोशंस का देखिए, एंड देन ट्राई एंड आइडेंटिफाई एम आई एड्रेसिंग दैट एज वेल और नॉट. जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उसी दिन मुझे सर्विस चाहिए. My enterprise customer will come back and say, I don't care, even if it is 2 a.m. in the morning, my factory has stopped, I need it now and I need it now. You charge me what, but I need to get my production going. Very nice. That's how it is. बहुत बहुत अच्छा लगा. मैं समझती हूँ हमारे साथियों को भी बहुत अच्छे से ये चीज समझ आई होगी, जो आजकल जो हमारा कहना चाहिए B2C को बहुत ज्यादा वो मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है. हर कोई चाहता है दुकान न जाए, वो पहले अपना ऑनलाइन परचेजिंग करे समथिंग. तो बहुत मैटर करता है जो आपने सैलिएंट फीचर बताए हैं. एक क्वेश्चन भी इसमें आया था मैम कि B2C जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें B2C का क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, लाइक लोकल में और ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है B2C मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज में? इज देयर एनी डिफरेंस काइंड ऑफ, लाइक आपने इमोशनल तो बताया ही अभी. ओके, सो आपने मुझे वो जो ग्लोबल वाला क्वेश्चन पूछा था, एंड आई गिव यू दैट एआई एनालॉजी एंड हाउ डज इट वर्क. तो वहां तक अपन शायद आ गए थे कि यू आइडेंटिफाई द कमांड सेंटर, यू मेक योर मार्क, you bring in your thought, and then of course execution. But I think मुझे global job मिल गया, चलो मिल गया, global मिल गया मुझे, and I am on top of the world कि चलो भाई global मिल गया. And that's where the tightrope starts. वो जो रस्सी है, and you have to walk on that road, and that is very important that you don't get off balance and fall off, क्योंकि complexity बहुत ज्यादा है. Complexity of global market is very high. For example, मैंने एक चीज, I'll give you an example of let's say WhatsApp. Okay, WhatsApp is working here. There are countries where WhatsApp doesn't work. Yeah. Right.
So they say नहीं हमारे इसमें there could be a legal challenge, there could be a compliance challenge, and they will say ये acceptable है, ये नहीं है. So वो complexity आपकी different हो गई. For example, I'll give you another example, tax laws. हमारे यहाँ GST 18% लगेगा, उनके यहाँ 2 tier में लगेगा, एक country का लगेगा, एक state का लगेगा, एक county का लगेगा. So it gets complex. The you know जो आपकी जो recipe है ना वो अब it's getting to the boil now. So that is one part of it. The second is the scalability. Are you able to scale? I have got this, but can I multiply into 10 raised to the power 7? Do you have that capability? अगर नहीं है कैपेबिलिटी लेकिन डेवलप करना चाहते हैं तो कौन सा फैक्टर है? अगर कैपेबिलिटी नहीं है मान लीजिए लेकिन फिर भी ग्रो करना है उस बिजनेस को, तो फिर क्या करें? इस जगह पर कौन सा फैक्टर है जिस पे ज्यादा ध्यान दें? हाँ, अब I might not have one because situation and business will change. पर जैसे अगर हमको स्केल करना है, अब मुझे ये देखना है कि मैं if it is production, do I have the capability of producing so much? That is one example. The second one is if I am setting up a factory, do I have the capability of investing $million more myself in doing it? And there are ways around it as well. So that's what we say. आजकल का ज़माना वो नहीं रहा कि zero से शुरू करो और end तक करो. You will find people, collaborate with them, affiliate with them. उनसे बोलो आप यहाँ बनाइए, मैं यहाँ ये करता हूँ. So there is, because now we are in a very virtual world. Everything is so virtual that you have that capability. आप YouTube पे जाओगे, आप influencers को देखोगे, you'll find tons of people out there. It is just a matter of how much are you willing to give in to understand that scale. And then you can, have a joint venture with them. You can say, I'll do an affiliate marketing with you. There are ways of doing multiplying. So that multiplying of 10 raised to the power n, you have to understand. And in your business, what is that multiplier is something that is very important. And the third very important factor, which I think हमारी जैसी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है सेंसिटिविटी. वैसे हमारा जो देश है उसमें इतनी सारी विविधता है, डाइवर्सिटी है, दैट आइडियली वी शुड बी वेरी सेंसिटिव. मतलब अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाओगे, ईस्ट से वेस्ट में जाओगे, एवरीथिंग चेंजेस. लैंग्वेज बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है, कल्चर बदलता है, क्वेश्चन कल्चर बदल जाता है. तो कल्चर का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केटिंग में कितना रहता है? उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप सजेस्ट करेंगे? बहुत ज्यादा रोल होता है कल्चर का. हाँ, उसको फैक्टर लेते हैं. हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि कल्चर डिफाइंस many things. Something which is acceptable for us. जैसे हम इंडिया की मीटिंग में कई बार ये होता है कि 15 मिनट लेट चलेंगे, चला जाएगा, राइट. कस्टमर भी वेट कर लेता है, आते होंगे, ट्रैफिक में फंस गए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ऑल दैट. आज फॉग है, आज ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ऑल दैट. I mean, we are very accommodative, I should say, in doing that. But let's say I was working with Sony. अगर seconds में भी over हो रहे हो, you are thrown out. You are thrown out. Yeah. That is the noticeable point. बहुत सेंसिटिव हुआ. नहीं तो एफिशिएंसी भी चेंज होगी ऐसे. ना, अगर आप अपने स्क्रिप्ट में, अपने किसी में डॉट लगाना भूल गए हो, you are asked. So I mean, and I think that's why Sony is Sony, because they are very quality conscious organization. Very quality conscious organization. And I think I learned that as a very hygiene factor, I should say, from them, because you need to be just too good. बहुत सुंदर मैम. इसीलिए आपके व्यक्तित्व में जो सबसे चीज है, मैं साथियों को बताना चाहती हूँ, शी इज परफेक्शनिस्ट. इनके साथ मैं 2 दिन जुड़ी हूँ और मैंने देखा कि हर एक कॉर्नर का एग्जीक्यूशन का अपडेट है मैडम के पास. इस वक्त हम जो भी आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटा सा एक इवेंट है ये, लेकिन हाउ परफेक्शनिस्ट शी इज.
ये आप लोग देखें कि ये जब प्रैक्टिस बन जाता है तो क्वालिटी रहती है, हमेशा रहती है क्वालिटी। तो बहुत अच्छा लगा मैम। कभी आपने ऐसा हैव यू एवर डिड यू ब्रेक द ग्लास सीलिंग? I think before we conclude on this portion of it, and I think Yeah, we take a pause maybe. yeah, Just to wrap up this kind of session, I would say yeah, there are um, to build a career. I wouldn't say yeah, just local or global or anything, but I think yeah. to build it up. And if there are any young audience, or if ever someone looks across, or maybe for our children, there are three elements to it. One is the hardware. वो हार्डवेयर ऐसा होता है ना कि आपने एक कंप्यूटर बनाया, उसका स्पेक्स डिसाइड किया कि अच्छा इतना प्रोसेसर ये लगना है, ये लगना है, यू डिसाइड ऑल दैट, राइट? तो वो हार्डवेयर बहुत जरूरी है। फिर होता है उसका एक सॉफ्टवेयर, या आप उसका जो इन्वायरमेंट आप बनाते हो कि आप विंडोज 11 पे चलाना चाहते हो, एंड्रॉइड पे चलाना चाहते हो, iOS पे चलेगा, ऑल दैट बिकम्स द सॉफ्टवेयर, एंड देन कम्स द एप्लीकेशन लेयर ऑफ इट, right? So the hardware is first fundamental is, I call it as GRP TCS, which is you need to have a goal in front of you, and that goal you have to decide, no one else, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, सब अपना अपने विचारों से आ रहे हैं, and we respect all of it. सर अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हो तो दैट यस, पर आपको ही डिसाइड करना है, कोई और आपके लिए करेगा तो शायद मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मेरी चीज है भाई, मैं डिसाइड करूंगी, कोई दूसरा क्यों, राइट? सो दैट हैज टू बी देयर। बट देन एक बहुत रेजर शार्प फोकस चाहिए, वो फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक वर्ड बोला रेजर शार्प फोकस चाहिए। ये अगर हमारे मल्टीपल गोल हैं तो हम उसको पहले फेज में क्लासिफाई करें और फिर रेजर शार्प होंगे, यानी आप पहले कोई तो फोकस कर लें, पहले एक गोल पे फोकस कर लें, फिर नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पे। 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, पहले एक प्रोजेक्ट के लिए 2 दिन लगा देते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट 2 पे और प्रोजेक्ट 3 पे जाएंगे। एंड देन एक और चीज है कि अगर 3 प्रोजेक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि हमको ये डिसाइड करने पड़ेगा, प्रोजेक्ट बी इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोजेक्ट ए, और प्रोजेक्ट सी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। तो ये प्रायोरिटाइजेशन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सी में उलझ गए और हमारा ए वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो तो टूट फुट हो गया। So it's like, juggling the balls. You are a juggler. और आपको ये पता होनी चाहिए कि जो कांच की बॉल है वो नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे सबसे पसंद है और वो टूट जाएगी। जो कैच करना है पहले उसको हाँ, वो टूट जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सारी स्ट्रेटेजी बताइए आपने। अब मुझे नहीं मालूम साथी कितने इंटरेक्ट हुए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसमें चैट में मुझे बताएं कि कुछ और अगर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। मुझे तो लगता है बहुत गहराई की बातें मैम ने अपने अनुभव से भी बताई हैं, और फिर भी अगर लगता है कि कोई बिजनेस की हमें आज जो मुकाम मैम ने हासिल किया है, वो मुझे जो महसूस हो रहा है कि स्ट्रेटेजी में जाने से पहले आपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा किया, आपके ऑब्जर्वेशंस बहुत स्ट्रांग रहे होंगे, तभी आपने ये चीज आप वर्ड्स में बोल रहे हैं, क्योंकि यू प्लेड विथ ऑल दिस साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, सो दैट इज रिफ्लेक्ट। मैं एक बहुत सीक्रेट रेसिपी बताती हूँ तुमको जी, और सॉफ्टवेयर भी कवर कर ही लूं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज something which I call it as a hygiene factor. आपको ब्रश करना ही है रोज, कम वॉट में, राइट? सो दैट इज योर स्मार्ट वर्क। ऐसा कुछ नहीं है कि करना है, वो तो हाइजीन है, वो तो चाहिए ही चाहिए। एंड योर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। आई वॉच ओवर माई शोल्डर, आई डोंट नीड एनीवन टू वॉच। मेरा वर्क एथिक है कि मेरे को अगर 8 बजे लॉग इन करना है तो मैं 7:50 पे लॉग इन करके बैठूंगी। सो दैट इज योर वर्क एथिक्स. And that stands a lot. It talks a lot. And of course, we spoke about quality. It doesn't matter. Even if you are sweeping the floor, you should sweep as if Leonardo da Vinci is painting the Mona Lisa. You should have that amount of, the heart, and also, ready to put that grit in doing that. Yeah. And बाकी का तो application will keep on changing, environment will keep on changing. Global ले लो आप, local ले लो. बट हाँ, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स तो रहेंगे ही रहेंगे। और सबसे जरूरी, एंड आई थिंक इंजीनियर्स हैं हम सब लोग, और हम सभी इंजीनियर्स कई बार भूल जाते हैं ये चीज। हमको पता होता है,
We are very intelligent lot. All Gesuites out there, you guys rock. You are amazing people out there, very intelligent people. पर हम कई बार क्या भूल जाते हैं कि मुझे लगता है कि जब आप किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन में जाते हैं, you work with 5 senses. हम सब ने सुना, but if I have to say what is my edge in doing it, I work with 6 senses. And my 6th sense is a common sense. Yeah, absolutely. It's just a common sense. You just don't need जो टाइम टू टाइम रिफाइन करते रहना पड़ता है. जब हम किसी समस्या में घुस जाते हैं तो हम वो चीज भूल जाते हैं. हम वो उसको जैसे सॉल्यूशन लेने के लिए अगर किसी समस्या में घुस गए तो मैंने देखा है कि हम वो कॉमन सेंस छोड़ के वो उसकी जितनी स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हो घुस गए, वो आप बनाए रखिए. उसको वापस उसको कई बार निकलना पड़ेगा, फिर घुसना पड़ेगा. देन या वेरी वेरी ट्रू. एक क्वेश्चन और है मैम आपके लिए. अप्रिसिएशन भी आ रहा है कि आप एक ग्रेट मोटिवेटर हैं. और एक क्वेश्चन ये भी है कि B2C कस्टमर लाइफ साइकिल का इंडियन स्टार्टअप्स या हाउ B2C कस्टमर लाइफ साइकिल ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल पीयर्स. आई वुड से B2C जब हम बात करते हैं इसमें एंड यूजर कनेक्टिविटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे हम कस्टमर पिरामिड बात करते हैं या चैनल्स बात करते हैं, उसमें बहुत लेयर्स होती हैं, है ना. फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर. इफ आई टॉक ऑफ इंजीनियरिंग, लेट्स से वेरी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग फर्म लाइक Schneider that we were working on, that we will have someone who is one set which is just distributor, which is a global distributor. वो कहीं बैठ के कहीं दे रहा है. So that is one, but that is also your customer. Second could be कि OEM, वो आपसे चीज ले रहा है और उस पे बिल्ड कुछ कर रहा है. So he's an OEM. And they are also too much into. Then you might have a system integrator, जो सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है बॉक्सेस लेके, right? And then you might have a consultant, maybe like you or maybe many of our people who will just consult. जैसे आप जाते हो आज्ञा किसी को कंसल्टेशन, एंड आई नो यू हैव बीन डूइंग ग्रेट वर्क देयर. तो अगर आप जाओगे किसी को कंसल्टेशन के लिए तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये, आप ये बोलोगे कि मुझे ना इतने चीज चाहिए, X to Z is what you need, right? So but you are a strong person in deciding कि कौन सा लेना है, A लेना है, Z लेना है, you don't know, but someone has to. But when you come, इसके बाद आता है maybe the actual user. So it can be a user, it can be a consumer. तो ये जो B2C strategies होती हैं, I would say इनका element of sensitivity and I would say cultural sensitivity is very high as compared to, let's say, when we are working in India. Very, very different. So I think that C makes a lot of difference when we talk of these kind of startups. However, we have Indian startups who goes and does there. So I would say just go spend time, just take 1 month, understand what they are and how they are. And anyhow, you will understand. See, you will understand the C piece there. ठीक है, उनको स्किन में पहचानो पहले. ये मैम गेसू के आज हम प्लेटफॉर्म पे है तो हम गेसू की यादों में चलते हैं. ऑल्दो वी हैव क्रॉस 43 मिनट्स एंड गेसू में आपका एडमिशन हुआ, आप 92 बैच के पास आउट हैं. हमारे बहुत सारे बडिंग इंजीनियर्स हैं जो बिल्कुल एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि जब हम ये शोज करते हैं कि आप आए, आपने वहां खुद को कैसे डेवलप किया, बहुत सारी बातें. तो हम थोड़ी गेसू की यात्रा पर बात करते हैं. जब आपका तो हम गेसू चलते हैं और उज्जैन चलते हैं. जैसे ही गेसू में आपका एडमिशन हुआ, क्या आपके मन में ड्रीम था जब आप एंटर हुए? ओके, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी कि गेसू इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने की जगह तो थी ही. सो ये मेरी विद्यास्थली है जहाँ से I learned my professional career starts from there. Learning वहीं की है. Second, it was my कर्मस्थली. Professor JP Agrawal was so very gracious and kind. ये मेरा पहला जॉब मैंने गेसू में पढ़ाया है. And I think that feeling I will never forget where I was. मुझे भी पढ़ाया आपने. मुझे भी पढ़ाया आपने. मैं आपकी क्लास में दौड़ के जाके बैठती थी. So nice to know. So वो कर्मस्थली भी रही.
And many of my seniors and many of my classmates would also know that it was my love land too, because I found my soulmate in Asit there. साथियों साथियों मैं आपको यहाँ बताऊं कि मैम ने गेसू से केवल डिग्री ही नहीं हासिल की, साथ में अपना लाइफ पार्टनर भी चुना। और असित पंत सर इनके सोलमेट हैं, और ये स्मार्ट कपल हमारे गेसू परिवार का एक बड़ा इंस्पिरेशनल कपल है। मुझे मौका मिला तो मैं असित सर के लिए भी चाहूंगी कि हम एक उनके लिए भी सेशन करेंगे, या गेसू संवाद के हमारे कोई टीम मेंबर करेंगे। बहुत अच्छा लगा है आपसे आके। मैम जैसे आप So, आए हैं तो गेसू में, so let me just तो Gesu mein, okay, so one, I think I always wanted to be an engineer for sure. ओके, क्योंकि मेरे फादर के पास लैम्ब्रेटा होता था हाँ, और हम उसको सर्विसिंग कराने लेके जाते थे, खुलता था हाँ, वो। हाँ, वो बड़ा हाँ, हाँ, इंटरेस्टिंग लगता था कि कुछ इसमें इंजन स्कूटर है, खोला, सब कुछ होता है, हाँ, एंड इट्स सो हाँ, फैसिनेटिंग। मशीन आई दिख वाज रही है, वांटेड टू हाँ। बी एन इंजीनियर। हुँ, पर अम, हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि व्हेन आई वाज इन, आई आई बिलॉन्ग टू सीबीएसई स्कूल, सेंट मेरीज में पढ़ती थी मैं। तो एक साल ऐसा हुआ एमपी में कि जब दे वर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 11th टू 10+2, या तो वो साल में कुछ पीईटी वगैरह का सीन नहीं रहा, एंड नहीं, ऑब्वियसली आई वाज ज़ीरो बैच था, ज़ीरो ज़ीरो बैच बैच, का एंड आई था। वाज हुँ, सो डैम डिसअपॉइंटेड। आई थॉट हाँ, कि ये क्या हुआ? हुँ। पर बट ओके, सो आई आपका फर्स्ट बैच था, आपका फर्स्ट बैच था जो सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। करेक्ट, या या, this was the उसके पहले first 5 ईयर डिग्री कोर्स था। 5 year degree course, हाँ, not और आप not लोग the 4 4 ईयर year, में सेमेस्टर 4 year, सेमेस्टर सिस्टम yeah. में आए थे। या तो actually I joined science college, चली गई, मैंने कहा I got admitted into something, and क्योंकि when you look back, actually everything is different, the course is different, the skill sets required was different, everything was so different. तो वो थोड़ा सा एक बार तो setback था, and of course when I joined engineering college, मुझे, I would say I was lost. I was completely confused person, and I ओके। was terrorized, I should say. कि हुँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ आ गई हूँ मैं, मेरे को इंजीनियर हुँ, बनना था, आ भी गई हूँ। हुँ, हुँ, एंड हुँ, um, I was also, getting very difficult to adjust to the transition, because I was coming from St. Mary's, where it was discipline. एक छोटी छोटी चीज हाँ, was हाँ, like too much of a हाँ, हाँ। discipline, and this इन environment कॉन्वेंट was स्कूल too, का जो and it was very very different. हुँ, But I think I would say कुछ एंजल्स होती है ना आपकी जिंदगी में, हाँ, आ जाती है। सो हाँ, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्लास अटेंड करूं नहीं करूं, कोई बोलता करो, हुँ, कोई बोलता जीटी हुँ, लगाओ, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो हाँ, रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ, सो बट आई थिंक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माय सीनियर्स, हुँ, जिनने मतलब हौसला बहुत दिया, फॉर दैट मैटर ज्योत्सना दीदी, नीता दीदी, दे वर सो काइंड, दे वर सो हुँ, केयरिंग। हुँ, सो आई थिंक यस, आई बिलीव इन एंजल्स। या तो कहीं न कहीं वो मिला। फिर दूसरा आई वुड आल्सो से कि ना गेसू में हमारे समय में, एंड अब हो सकता है सारे कॉलेजेस अच्छे हो गए हों, कॉलेज तो अच्छा होता है, लेकिन रिसोर्सेज़ कई बार ये होता है कि टीचिंग स्टाफ है, लैब्स हैं, ऑल हुँ। दैट आर लाइक ना, कई बार दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि अवेलेबिलिटी है, नहीं है। हाँ, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे भी फैकल्टी उस टाइम कम थे, नया हाँ, खुला था फैकल्टी, डिपार्टमेंट तो, यस, हाँ, कंप्यूटर साइंस तो तब था ही नहीं डिपार्टमेंट। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, लैक ऑफ फैकल्टी तो था हमेशा। But I ये चीज़ think तो उस टाइम that is something very strong, which I learned in Gesu, ओके, and वो हर जगह काम आ रही है, मुझे अभी तक काम आ रही है। ज़रूर You know बताइए। what? Doing more with less. या Doing more with less. You've got less resources. You know it. या कम है, पता है आपको। पर उससे भी आपको कुछ बहुत अच्छा करना है। So how do you do more with less? And I'm या sure जब आपको ये करने का आप सोच लेते हो ना, तो पूरी कायनात आती है आपके साथ, साथ आपको देने सफल के लिए, बनाने के वाह! लिए। बहुत Yeah. सुंदर। And I बहुत won't, even I would say my seniors, जिसे बुक्स लेना हो, they या would give you the books, वो जो दूसरे चले गए नेक्स्ट ईयर के, वो आपको दे देते थे। या And
फॉर एग्जाम्पल गजाला मैम, आई मीन शी वॉज न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना, नोट्स कैसे होने, शी रियली हाँ, रियली यू नो हेल्प तब अस आप सो मच. इंटरेक्शन आपका इंटरेक्शन था हाँ, गजाला मैम से she was my teacher कंटिन्यूअसली? as well. She was my Yeah, teacher. that time she She was was my teaching teacher that. as well. Yeah. Yeah. So I mean बहुत सारे लोग एंड आई नो Yes. जो मैं तुमको बता रही हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंड मे हाँ, बी समथिंग विच आई वाज नॉट व्हाट वाज पीपल सी सॉ मी एट, और मे बी हाँ, कि बिकॉज आई इट वाज माय सेकंड लिस्ट जिससे मैं गई थी, सो मे बी आई वाज द डम्बेस्ट ऑफ द लॉट एंड ऑल दैट, हाँ, हाँ, बट हाँ, डजंट हाँ, मैटर. होता हाँ। है. आप uh, आपके समय में बहुत सारी गर्ल्स आई थी, आपके बैच में एडमिशन हुआ था उस दौरान। हाँ, वैसे तो इंजीनियरिंग यस में कम ही यस. गर्ल्स होती थी, ना सीनियर में थी इतनी, ना जैसे हम यस. लोग जूनियर बैच में थी, हमारे में नहीं थी। आपके में हाँ. तो ऐसा लगता थोक के भाव कॉलेज में सिर्फ आपकी क्लास है। आप या कौन-कौन सी या फ्रेंड्स के साथ आप रहते थे उस टाइम गेसू ये में? देखो, गेसू में तो रहते तो सभी के साथ थे, क्योंकि इट वाज अ वेरी क्लोज नेट ग्रुप, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जरूर हम वी वेर अ बिग बैच, पर जैसे हुँ, ही हम लोगों की ब्रांचेस डिसाइड हुई, देन आई थिंक वी वेर लाइक अ वेरी क्लोज set of people with whom you were हुँ, working, you were हुँ, interacting, and also हुँ, facing lot of challenges. And हुँ, I know, हुँ। जैसे मैंने बताया आपको, doing more with less शायद मुझे समझ में नहीं आता अगर मैं गेसू में नहीं होती तो, क्योंकि सब कुछ हाँ, अगर प्लेटर पे आ गया है तो मुझे सिर्फ खाना है. आई डोंट इवन हाँ, केयर इवन इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ माय एपेटाइट टू ईट हाँ, इट. वो एक जुझारूपन डेवलप हाँ, हुआ। वो तो that was, and what also transformed Gesu transformed me was, maybe when I entered, as I said, I was lost, I didn't know what to do with anything and everything, but you won't believe, आप मैंने marketing जब choose किया, वो it was Gesu, because they were so kind. I mean, I was nominated as student council, I was secretary of the college, या आप and I was नॉमिनेटेड working with, सेक्रेटरी थे। आप हाँ, आई वाज़ नॉमिनेटेड वर्किंग, हाँ, सेक्रेटरी थे कॉलेज के। नॉमिनेटेड हाँ, क्या था, पर हाँ, आई वाज़ द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज. ओके। हाँ, या and that taught me, you know, how to maybe handle events, you know, or how do you organize, how do you plan. I mean, या and I would say there were whole lot of seniors supporting you. It was such a या comradeship amongst या us. It was ऑल maybe, द बेसिक लीडरशिप yeah, I think I सीड्स picked up सीड्स there where it was Patek या sir or Dipendra sir or someone telling me, no, 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 this या is not the right idea. Please go ahead and, हाँ, you हाँ, know, let's do it this way. And या how do you respect others' idea? How do you accept? How do you put across your ideas as well? या Because या उसके पहले तो पता नहीं होता है. So I think wonderful training ground as Gesu आपके IIM. साथ में इंटेल में जो डायरेक्टर हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की, जसदीप मैम, Jasdeep. उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, मैं आपको Oh, सुनाना so चाहूंगी। kind. So kind. उन्होंने बोला है, आई नो श्रद्धा इज माई स्टडी बडी एंड अ डियर फ्रेंड, इट्स सो हार्ट वार्मिंग टू सी हर रीचिंग दीज माइलस्टोन्स इन हर करियर, especially being a mother. It's a commendable job. Kudos, my friend, and wish you all the best. May you grow many folds and keep making us all proud. Thank you so much, Jasdeep. I know we have we have sailed through many things together, and she has been very kind. I would say she's a very kind person for sure, and she's a very accomplished person as well. I mean, very few technology women that you see, and she's one amongst them. And such a proud thing to have you, Jasdeep. Wonderful. हमने हमारी Uh, तो बहुत बातें कर ली. आज्ञा, you are a warrior. We really want to hear a few words from you as well. अरे नहीं मैम, मेरी तो अभी आपसे नहीं. इतना सारा समय होता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं आपका क्या-क्या चीजें हैं जो हमारे साथियों को बता सकूं। मैंने 2 दिन में कंटिन्यूअसली आपको सोचा है कि मैं कैसे इस छोटे से 1 घंटे में कैसे ब्रीफ करूं। सो वर्सेटाइल नहीं. पर्सनालिटी। इसके साथ मैं आपको बताऊं साथियों, मैम लॉयर भी हैं और हॉबी में तो बतौर फोटोग्राफी भी करती हैं, और इन सब के अलावा मेंटल हेल्थ पर एनर्जी हीलिंग भी करती हैं। और मुझे तो लगता है अभी सारे बिजनेस वाले क्वेश्चंस भी खत्म नहीं हुए हैं, और ये सारी चीजें, तो मैं इस पे आती हूँ सीधे कि हम लाइक
मेंटल हेल्थ पे आ जाएं, क्योंकि मुझे लगता है 54 मिनट्स हमारे सेशन के हुए हैं, और हम 1.5 से 2 घंटा भी हमारा खत्म नहीं होने वाला है आज हम। तो कुछ हाइलाइट्स चाहूंगी मैं, जिसमें एक तो ये कि आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया जब आप एमबीए कर रही थी, उसी दौरान आपकी शादी भी हुई, और आपने शादी की, एमबीए भी कर रही थी, और फिर जो भी आपका फैमिली एक्सपांशन रहा होगा, तो आपने इस पूरे कम समय में ये लेवल हासिल किया है बिजनेस में, और ये कंस्टेंट्स भी उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे जब आप मीन वाइल जर्नी में थे। तो क्या चैलेंजेस आप कैसे फेस करते थे मैम? कई बार फेल्यूर भी फील करते होंगे, तो वो थोड़ा सा खुद को जो आप Correct. प्रिपेयर करते थे वो Yeah. बताइए। Yeah, very interesting, and and I'm sure many of the people would recollect my epic marriage at a very tender age. But I वो बोलते हैं ना, I am blessed in many ways. So one of the या ways was that I came to a family which was, I would say, very loving, very loving, and very forward looking in terms of thoughts. So they were a very forward, thought driven family. My in-laws had been, of course, academicians, so they both were professors, and they, I think, very genuinely knew the power of knowledge, and that's what they wanted me to pursue. And I would say, since I would say, जब उम्र कम होती है ना, तो मेलेबिलिटी ज्यादा होती है. हाँ, You become very फैक्टर, fluid. चैलेंजेस, एनर्जी, हाँ, सब चीजें। एनर्जी ज्यादा होती है, मेलेबिलिटी होती है, and I think I had a very lot. I don't know about any other thing, but I know लेकिन कोई that थॉट होता है मैम उस टाइम, यानी कोई तो एक अपना आपका बेसिक प्रॉपर्टी होगी वो, जो आपको इन सब के साथ कैरी कर रही होगी। हाँ, मैं आपको 2 लाइन बताती हूँ. चाहे आहा मिले पर राह मिले, जिसमें मंजिल बसे वो निगाहें मिले. आह, क्या बात है। So बहुत सुंदर। तो कभी-कभी होता है कि you might feel कि the road is difficult. या You don't know how to traverse it. You don't know how will you make towards it. But अगर आपकी निगाहें फिक्स हैं, आपकी निगाहें पता है आपको कहाँ ले जा रही हैं, बस that's about it. I think then you would be able to do it. So I mean, yes, that fluidity is very much required when you have to do. And I think somewhere I believe in a balance. You need to have a balance. Unilateral personalities sometimes gets very difficult. And I'm sure you would have also seen कि अगर आप एक ही डायमेंशन में चलते जाओगे, तो आपको बाकी की चीजों का एहसास नहीं हो पाएगा, और वो बहुत जरूरी है. अगर मैं जब भगवान ने हमको बनाया तो हमको बहुत सारी चीजें दी है ना, आंख भी दिया है, नाक भी दिया है, कान भी दिया, एवरीथिंग इज देयर. सो वी कैन नॉट हैव अ वेरी यूनिडायरेक्शनल अप्रोच टू एनीथिंग. तो वो बहुत जरूरी चीज है. तो बैलेंस. आपने साइकिल चलाया? हाँ, साइकिल चलाया, उसमें 2 व्हील्स होते हैं, डेफिनेटली, है ना. और पहले दिन तो आप साइकिल चलाने नहीं पाते हो, क्योंकि दोनों गिरते को पड़ते हैं, बैलेंस कर गिरते पड़ते हैं. तो गिरना पड़ना एफर्ट्स चाहिए, इस एफर्ट, गिरना पड़ना तो इज अ पार्ट ऑफ वो द गेम. एफर्ट्स बैलेंसिंग में लगता है। हाँ. और हमारी आई एम लर्निंग गीता these days, and I picked up something very beautiful, which is called as Sambuddhaya. Sambuddhaya, which means that you need to have a balance when you think. आपकी बुद्धि जो है, I mean, keep a balance, because क्या होता है, both ways. जब आप बहुत खुश होते हो, and I think that might be my personality कि I'll get very overwhelmed. आपको लगेगा you're here, right? और जब आप गिरते हो और आप नीचे जाते हो, तब भी आपको लगता है what man, कहाँ आ गए, right? But what's more important is keep your balance. एफर्ट्स वहीं पे लगते हैं मैम। जैसे आपने बताया कि जब गिरते हैं, कभी कोई लॉस होता है, जैसे नौकरी चले जाना एक, या फेल्यूर होना, आपको बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर आता है, उस वक्त ज्यादा सैडनेस आती है कि आप अब कर नहीं सक रहे और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये थॉट आसान है कहना कि हम बैलेंस करें, लेकिन हमें कोई शक्ति चाहिए जो हमें इस बैलेंस के स्टेटस पे लाए। यानी वो एक थॉट चाहिए, वो हमें सिचुएशन चाहिए, कई बार नहीं मिलती, हमें उसकी तरफ कदम बढ़ाने पड़ते हैं, कभी हम बढ़ा नहीं पाते, और उस फेल्योर को हम कैसे बैलेंस करें अपने दिमाग के लिए, क्या चीज है जो
हमें इस तरह से बैलेंस आई करने में वुड लगा? देखो, हाँ, या आई वुड से कि देखो, जब आप व्हेन यू स्टार्ट ड्राउनिंग, when the things are bad, let's say loss of job, loss of loved ones, it can be any of it. It is heart wrenching. I mean, हुँ, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो व्यक्ति ही फील कर रहा है, राइट? हाँ, पर हाँ, कई बार क्या होता है कि आपको एक तिनके की तलाश होती है। वो हुँ, तिनका हो सकता है आप ही को एफर्ट करके ढूँढना पड़ेगा। वो हुँ। तिनका कई बार भगवान भी भेज देता है, कई मुझे बार तो ऐसे डिवाइन ही अनुभव फोर्सेस है। भी भेज देता है। मैम, हाँ, मैं इसमें तुम्हारा सोचती हूँ, अनुभव तो कितना, हाँ, आज्ञा तुम मैं ये बताओ सोचती इसके हूँ लिए मैम, तो, मैं ये तुम सोचती हूँ बताओ ये इसमें कि आज्ञा कई ये तो। बार रास्ता नहीं सूझता मैम कई बार, तो हाँ, और अब उसके बाद हमारा दिमाग ना हैंग होने लगता है कि हमें यहाँ से सहारा मिल जाए, वहां से मिल जाए, एक्सपेक्टेशन हमारे हुँ, बढ़ने लग जाते हैं, जो हमें और भी दुख देते हैं। यानी हम हुँ, जहां हमारे एक्सपेक्टेशंस आने लगते हैं, वो हमें दुख की ही कगार पे ले जाते हैं। तो हुँ, हुँ, मुझे लगता है उस जगह स्पिरिचुअलिटी, कनेक्ट टू गॉड, एंड देन आस्क देम कि भाई एक रिश्ता बना के ईश्वर हमें देता है शक्ति विचार के रूप में, या फिर कोई ना कोई हमारी तरफ से आता है सुपर पावर से, कनेक्टिविटी आपको हमेशा लो हार्ट से ऊपर थॉट देने की कोशिश करती है। उसके बाद फिर हमें शक्ति लगाना चाहिए, गिव अप तो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन उसमें बिल्कुल भी कहीं और से कोई आके करेगा, ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शक्ति लगती है या लेकिन मैम इसमें बहुत हाँ, शक्ति लगती है। ट्रू एक्सपीरियंसेस आज्ञा, यू आर आवर वॉरियर, वी नो यू आर अ वॉरियर, नहीं, एंड जो स्माइल तुम ही चली बता रही हो जाती वो है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं। पर हाँ, मैं एक मुझे और तो चीज़, हाँ, हुँ, तुम्हारा जो जीवन पथ रहा है, उसमें जो तुमने किया है, सो कमेंडेबल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, थैंक एंड यू। जो अभी तुमने गॉड बताया ब्लेस। वो सब इज़ द लर्निंग व्हिच द लाइफ हैज़ गिवन टू यू। हाँ, स्टेप टू स्टेप आते जाता है। नहीं तो हाँ, अटका ही पर रहता है दिमाग कि अटके कोई नहीं, आके करेगा, कोई करेगा, कोई शायद नहीं ये करता। सहायता कर दे, चाहे ये सहायता कर दे। अरे नहीं, हम खुद की सहायता करें, पहले तो ये हाँ, सोचो, उसके या बाद फिर कनेक्ट होके तो फेथ तब तो फिर है, स्लो फेथ तो हार्ट से बहुत हाँ, बड़ी चीज़ है। बट आई बड़ी थिंक चीज़ है। समवेयर एक और चीज़ है आज्ञा कि हम हाँ, लोग आई मीन आज का एनवायरनमेंट, तुम तो टीचर हो, तुमको तो बहुत स्टूडेंट्स मिलते होंगे, रोज़ हाँ, देखते होंगे आप लोग। लेकिन हमको ना ये सिखाया जाता है कट थ्रोट रहो, कॉम्पिटिटिव रहो, ये करो, वो ऑल दैट इज़ फाइन, आई एम नॉट या, डिसएग्रीइंग टू दैट, या, दैट इज़ रिक्वायर्ड। बट समवेयर मुझे एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है, वी एज़ अ फैमिली, एज़ अ या, सोसाइटी, एज़ all of it is कि we need to prepare ourselves and maybe our next generation as well, and equip them on maybe techniques, tips of how to prepare for a failure, व्यक्तित्व निर्माण, how द to prepare for कंप्लीट failure, या, क्योंकि सक्सेस सिर्फ हमेशा तो सक्सेस नहीं मिलती है ना, there are chances where you will really fall flat on your face, और वो होगा ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर हम बहुत फेल्योर के इंपॉर्टेंट लिए है। प्रिपेयर्ड हो, हाँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कहीं न कहीं हमको शायद ऐसा भी एक सेशन रखना चाहिए जहाँ पे हम अपने कहीं न कहीं मे बी टू आवर कंपेनियंस, टू आवर कलीग्स, टू आवर पीपल बी बी देयर फॉर देम। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कहीं आपको जब आप मेंटल वेल-बीइंग की बात करते हैं, वी नीड टू हैव एन एलिमेंट ऑफ काइंडनेस, या, व्हिच इज़ वेरी वेरी ट्रू। इम्पोर्टेंट। सब चीज़ों के लिए गूगल है, तुम सब कुछ गूगल पे पालोगे। Can you become a good person या, through Google? I mean, type. Can you become a good person? No. इस जगह पर मैं बोलना चाहूँगी मैम कि इसमें कौन से फीचर आपको लगते हैं गुड पर्सन होने में, जब हमें ईगो हमारा हर्ट होता है, फॉरगिवनेस हमें, अगर हमें काइंड पर्सन बनना है, तो हमें किन-किन चीज़ों पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है? लाइक मुझे लगता है फॉरगिवनेस, फॉरगिव, फॉरगेट, देन कौन-सा फैक्टर है जो हम, अगर एक काइंड ह्यूमन बीइंग बनना है, क्या ये गॉड गिफ्ट है या हम भी उसको मान सकते हैं? देखो, हाँ, आई थिंक ये तो आगे आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये आप संस्कार के रूप में लेते हैं, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू, हुँ, और एंड मोर फ्रॉम हाउ यू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू। हुँ, ये एक दिन में नहीं है कि अपन कुछ यू कैन जस्ट बूस्ट इट अप। बट हुँ, आई थिंक एक जो जैसे मैंने बोला, तुमने बोला कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, हुँ, यस, but when I deal with a human being, with my coworker, with my team हुँ, member, हुँ, with my boss, with people हुँ, around me at home, हुँ, हुँ, um, I would say you need to understand we are हुँ, dealing with human, and हुँ, human uh, may not be perfect.
डोंट जज द पर्सन विद दैट, बिकॉज दैट या आपको उसकी स्टोरी नहीं पता है, आपको उसकी एब्सोल्युटली स्टोरी पता ही नहीं कि वो हाँ इस क्यों मुकाम नहीं पे बहुत अगर सही उसने ऐसा कर भी दिया है, गिव दैट अलाउंस, थोड़ा सा टॉलरेंस रखो अपनी जिंदगी में, दे दिया यार कोई बात नहीं, छोड़ो। एंड यू नो व्हेन वी वर्क इन कीबोर्ड, दिन भर हम कीबोर्ड पे ठक 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 काम करते हैं, वी डोंट, आई मीन आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम कीबोर्ड, देयर इज अ बटन कॉल्ड एज या डिलीट, या there's a button called as या pause. Just या pause. या Breathe. Things will work out. या There's some buttons which are called as ignore. हम्म Ignore. That's about it. I mean, या you do, और कई बार ये भी होता है कि जो हो रहा है, जो कहा या किसी ने कुछ बोला भी, they may not really mean it. अगर आप उसको 2 दिन बाद पूछोगे, उसको वो याद भी नहीं होगा कि उसने कभी कुछ ऐसा बोला है, किया है, करा है, whatever. सही So, बात है I mean, you need to be like very, very, very kind to people फिर भी in these हमारे times. कई बार ऐसा भी होता है मैम कि हमारा फेल्यूर कई जो हमारे कुलीग्स होते हैं कारण हम दूसरे को नहीं दे रहे हैं लेकिन जैसे एक जेलस होता है जालसाजी होती है ताकि कई लोग ऐसे भी उठना चाहते हैं ना कि दूसरे को डाउन करके खुद उठना है Hmm, तो आपका hmm, फेल्यूर नहीं होता है वो लेकिन वो तो भी वो फेल्यूर क्रिएटेड होता है उस टाइम hmm, hmm. तो ऐसे में भी आपका एक माइंडसेट होना चाहिए उसके लिए भी काम करना पड़ता है आई मीन जैसे इफ यू से दैट Sure, प्रिपेयरिंग फॉर sure. दैट काइंड ऑफ फेल्यूर Yeah, yeah. हाँ देखो हम गाड़ी चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, व्हाटएवर, आसपास तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम्म ट्राम भी जा रहा है, बस भी जा रहा है, और एवरीथिंग इज हैपनिंग. सो हम्म my first intention would also be to save myself. You have to हम्म save हम्म yourself. Yeah, हम्म, yeah, you have to हाँ save yourself. पर अगर हाँ by chance टकरा गई है, there's no point there, I mean there's no harm in saying sorry, and there's no harm in also, you know, अगर लग गई है तो वो ठीक हो जाएगी, गाड़ी ही है ना. सिर्फ दैट जगलर की अलाउंस, वो बॉल संभालो जो ग्लास हाँ की बस, है हाँ, टूटने ना टूट ना पाए वो, टूटने टूटने ना पाए बाकी बाकी चलने तो दो बाकी चलने दो. You know, बहुत this सुंदर this very good one line which is there. या Get your big things right. या Just get your big things right. बाकी की चीजें ठीक है, it's okay, चलेगी. वो ऐसा, it cannot be a picture perfect life for anyone. And it is not the end of the world. I lost 1 year in this PET becoming an engineer, and I felt so miserable, so bad. But then I look back now, कोई पूछता पूरी नहीं लाइफ मुझसे स्पैन कि, में पता ही नहीं चला पता ही नहीं चला कि वो 1 साल, अब कोई पूछता नहीं मुझसे कि तुम कितने साल में घुसे थे, 1 साल क्या किया तुमने. No one ever सही asks me बात है that question. तो सही उस बात है बहुत समय सही लगता है कि that is life and death. But you know, हम्म, think objectively, it may not be life and death. ऐसा इतना situation भगवान बहुत कम देता है जब बिल्कुल life and death आमने हाँ सामने खड़ी है, and you have to choose कि life choose करूं कि death choose करूं, और बीच हाँ में हाँ खड़ी हूं. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा भगवान हम्म, भगवान is kind. God is very kind to हम्म, people. जो ऐसा जैसा नहीं उसको होगा. वैसा एक्सेप्ट करें और उसके बाद अपना फोकस बनाए रखें कि हमें राइट थिंग टाइमली हो जाए सो बहुत सुंदर मैम Yeah. आप गौरव फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं और एनर्जी हीलिंग मैं दोनों पे बात करूंगी हम ब्रीफ में कर पाएंगे लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं दर्शकों सारे हमारे साथियों को बताना चाहती हूँ कि मैम एनर्जी हीलिंग पे भी एनर्जी थेरेपी करती हैं तो अगर जुड़ना चाहेंगे उससे तो हम उनका ईमेल आईडी जरूर आपको देंगे तो बिजनेस से रिलेटेड तो ठीक है टेक्नोलॉजी आप पूछें लेकिन मेंटल हेल्थ और एनर्जी हीलिंग के लिए भी मैडम से एडवाइस जरूर जुड़े रहें लेते रहें ऐसा मैं सजेस्ट करूंगी मैम थोड़ा सा एनर्जी थेरेपी जो आप करते हैं एनर्जी हीलिंग इसके बारे में हमें बताएं Yeah, I would say to all the audience and maybe to anyone across. Uh, First of all, बुखार होता है, right? दवा खाते हैं, खाना पड़ती है, right? That's one way of treating yourself. That's one way. अगर हमको anxiety हो रही है, I'm very anxious, I'm very stressed. Now, what is mental health? Mental health ऐसा नहीं है कि कुछ out of the world हो गया तभी उसको mental health define करेंगे. What do you need? Maybe a good warm hug gives you strength. yeah. Give that. That is free. Hmm. You will find a lot of people around. I mean, with the face, you can understand they had a rough day. Hmm. You don't have to ask कि क्या हुआ. Hmm.
वो हम शायद सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे उसके लिए, राइट? हाँ बट थोड़ा सा हौसला दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, हाँ, जस्ट बिल्ड सम होप, जस्ट बिल्ड ऐसा सम रे ऑफ होप ऐसा एटलीस्ट। जैसे मैम कई बार ऐसा होता है कि लाइक आपको जैसे डिप्रेशन वर्ड बोले या डिप्रेशन नहीं, आप हाँ, लो हार्टेड रहने लग गए हो एक ड्यूरेशन के लिए, या लंबा खिंच रहा है वो, उसमें मैंने देखा कि कई बार अगर आपका ईगो हर्ट हुआ हो, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का हर्ट हुआ हो, तब इस तरह का ज्यादा डैमेज होता है मेंटली। तो ये क्या कोई दूसरा तो करेगा नहीं, ये जो है हमारा ही रिस्पेक्ट हमने बनाया और हर्ट हो गए लाइक दूसरा। मुझे ऐसा लगता है ये इस बात को लेके मेरे सामने भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो मुझे लगता है हम्म कि इस पर आप जरूर थोड़ा सा करें कि लाइक आप लो हैं लेकिन आप हीलिंग की प्रोसीजर में जाने के लिए कौन सा थॉट पहले रखें खुद से, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस ही है जो आपको हीलिंग में ले जाएगी। हम्म तो हम्म, हम्म। वो थोड़ा सा थॉट बताएं मैम। Okay, so I will try and answer again into two aspects. One is that yes, when you're low, ऐसा लगता है कि world is so dark. It's a doom day, and the day is coming to an end, and we don't know what to do about it. या Um, and I would say faith, and I don't mean religion. Of course, religion in my definition, and that definition may be slightly different than the common definitions that we get. कि religion, try and understand your religion. I don't mean कि Hinduism है या Christianity है या whatever. You don't have to go, because that is a different part of it. But आपको my religion could be music. That is my religion. I love it. तो आपको कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई करते हो उससे, राइट? माई रिलीजन इज रनिंग, माई रिलीजन इज इज जस्ट टू गेट आउट एंड टॉक टू पीपल। सो कोई रिलीजन आपका होगा, वो आपको पता होगा। एक तो पहले वो अगर कहीं से पता, मतलब आई एम श्योर यू वुड नो, उस समय हो सकता है मार हो गया हो, तो थोड़ा सा इंटेंशनली उस दिशा में जाने की कोशिश कीजिए। यू विल फाइंड सोलेस, you will definitely find solace there. हमारे I mean हमारे भारत में बौद्ध धर्म में, whether it is Buddhism or Hinduism, if you are anchored to one of it, that will also help. And सबसे अच्छा जो चीज है, that is the third one, beautiful one, is humanity. Yeah. Humanity. And even if you don't like humanity, you are so averse to humanity because they have really hurt you so much, you don't even want to see another person. Animals are such a good companion. Animals भी नहीं समझ में आता है, too much of a thing. Just go to any nature, any place, park, forest, wherever you can. Go to a tree. Yeah, absolutely. And tell what you feel to that tree. That tree is not going to tell it to anyone. वो अपने पास रख लेगा, वो किसी को नहीं बताएगा. Yeah, Just do that. Yeah. Just do that. आपको किसी को नहीं बताना है ना, मत बताओ. Yeah. Just go and tell it to that little fish in the pond, or maybe a stray dog who is just around your neighborhood. Just go and tell everything to that dog. You'll feel so light. That is mental health. That is just mental health. पुनीत सर लिख रहे हैं कि आज्ञा is an authentic example of how to deal with setbacks and hurts. Yeah, that's what I have been saying. You are a warrior. You have got. We should tell Puneet sir that we need to have a session of yours. You are such an accomplished person. I also wanted to know कि तुम्हारे, and not only on the personal side but also on the profession side, as to what do you think about AI? How is AI changing the world? What is the future of AI for us? I mean, there are a whole lot of questions from my side also. एक और रुपेश त्रिवेदी लिख रहे हैं, इट्स आज्ञा's power that she can say laughing and smiling, it takes power to deal. I don't know. ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो बी वाइब्रेंट इन द सेशन एंड जस्ट लिखते जाएं. बहुत सारी चीजें हम मुझे तो लग रहा है बहुत सारी चीजें छूट गई है. तो या
अब मुझे लगता है कि मैम हम आप कुछ अगर मैसेज देना चाहें हमारे गेस्ट वाइट जो इंटर्नशिप करते हैं आपके बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, आपने डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, तो एक ऐसा हमेशा ही एक कहना चाहिए डायलेमा होता है कि हम ये कंपनी करें कि वो कंपनी करें, किसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। एक मतलब जब जो बडिंग इंजीनियर्स होते हैं उनको बिल्कुल दिशा नहीं होती है, तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा आप बताएं मैम कि कैसे करना चाहिए। I would definitely try and address that. But एक और चीज है, maybe to Samvad as a platform or to Puneet sir and Agya you, कि we should do session only for our budding engineers who are preparing. Yeah, So you know, yeah, there's a transition from a campus life to a corporate life, or from definitely. campus to a work life. So how do you transition? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं हाँ, शायद इतना इसको मतलब आई वोंट डू जस्टिस टू इट इतने शॉर्ट में बताने के लिए, पर डेफिनेटली इट इज अ ट्रांजिशन एंड वी डू नॉट हैव, वी आर कंप्लीटली लॉस्ट देयर। हमको पता नहीं होता है कि जब हम पास आउट होते हैं कि इंटरव्यू क्या होने वाला है, ऑफिस में कैसे जाना है, क्या करना है। सो आई मीन वी कैन डू अ मॉड्यूल ऑन दैट सम टाइम, और जब इनका ऐसा ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा होता है वी शुड ट्राई एंड समथिंग यू नो डू, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। बट आई वुड डेफिनेटली से वन थिंग, do more with less, try and find all your resources. There's a network of it. If Agya is successful, she would have whole lot of people who would have supported her to reach here. If मैं कहीं हूँ तो बहुत लोगों का इसमें हाथ है. It is just not my capability for sure. It is very, सक्सेस बिलोंग्स let's टू say, अ टीम। success belongs to many people. Yeah, Maybe a very strong foundation support of Asit. I think yeah, I yeah, couldn't have existed with, I mean, I can't have imagined at least. But also your colleagues, your team members, your managers, whatever I am today, it's my मैनेजर जिससे मैंने कुछ सीखने की कोशिश की, जिनने मुझे डांट के सिखाया, मार के सिखाया, वट एवर यू से। स्कूल में तो चलता था, अब तो नहीं चलता, एवरीवेयर इट इज नो, बट देन या देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट, even including the governess at my home who was taking the entire responsibility, even my kids maybe. You know, the elder one was standing for the younger one when mom is not around. But I think you need to develop that trust and build it. I would say it is all investment. So you just don't invest in property, just don't invest in shares. It has got a limited shelf life, but invest in human being, invest in relation. It's going to pay you a lot, even if to an unknown person. वो दुआएं देंगे, वो दुआएं लगेंगी आपको कहीं ना। डेफिनेटली। और हमें भी एक सेल्फ कंटेंट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन डेवलप हो, जो हमें स्ट्रेंथ देगा हमारे आगे काम करने की। Sometimes, you know, there is a beautiful phrase and it's phenomenal. Sometimes you have to do nothing. Yeah. Just do nothing. Observe that is also yourself. one therapy. Yeah, that's the biggest therapy. Do nothing. Yeah. ट्रैफिक चल रहा है, देखो उसको भाई, कितनी कैसे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा। Just do nothing sometimes and that's so wonderful. That's also very, very beautiful. So being in the moment is something which is definitely there. आपका कनेक्शन बीच में थोड़ा सा रुका था। Okay. अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो should we do a wrap now? Yeah, I think Yes, Shraddha, you are on. I think we lost Agya's connection. Yeah. Connection for now. Yeah, but she would join, I think, soon. And Shraddha, what a great session! And I never knew that you are such a good motivator. सर, ये तो आपका बड़प्पन है। आप तो मैंने जैसे बताया, आप तो सीनियर स्क्वायर हैं मेरे। आप ही से सीखा है सर ये सब। आप तो इंजीनियरिंग के सीनियर हैं, एमबीए के सीनियर हैं। You have been a great example. Today I want to take that. Let me tell you this. You are a wonderful motivator, wonderful communicator. The way you are communicating. I think someday we would have a session with you
We can on have, how to sir, one more session. how to communicate. Yeah. So Agya is here, so I will now again. नहीं सर, आप भी बने रहिए। Uh, संवादिता है, हम वैसे भी साथियों के साथ जुड़े हैं, आप भी जुड़े रहिए सर, बढ़िया, Yeah, but- अच्छी बात है। वैसे भी हम समापन की तरफ हैं। मैम थैंक यू सो मच। ये मुझे someone बहुत raised their hand for a long time. Should I connect the person? पूछने के लिए सर। Someone is raising Neeraj from Hyderabad. ओके, So हाँ with your हाँ, permission, ले should I लेते connect? हाँ सर। Let me see if he wants to join हाँ, on the screen. हाँ If there's हाँ, something important he would like सर to ask. एक मैसेज भी मैं मैडम को बताती हूँ जब तक आप उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। ये हरि कुमार नायर, श्रद्धा, योर हम्बलनेस इज द सेम एज ड्यूरिंग द रंगायन एंड आयाम डेज। थैंक यू सो मच। आयाम एंड रंगायन आज भी रंग भरते हैं जिंदगी में, और वो जो आयाम पे मैं आज हूँ, शायद उसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ कहीं ना कहीं हैं। ज्वाइन किया है हमारे साथ सर, किन्हें हम जोड़ रहे हैं अभी हैदराबाद से? नीरज है हैदराबाद से। अच्छा, हाँ नीरज जी आप बताइए अगर आपका ऑडियो है कनेक्टेड तो। But I can't see him. ओके, हाँ, we got नमस्कार, स्वागत है सेशन में। आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा सर। Yes, sir. Now it is appearing. या प्लीज बताइए। I and Shraddha, we did the admission together in 1988. Did the engineering 88. together. I'm in Okay. mechanical, she is in electronics, and both belong to Ujjain. In fact, I am from Loti, she is from the Saint Convent School. So remarkable memories. Yeah. And this, yeah. थैंक यू सो मच नीरज जी। मैकेनिकल तो मैं भी करना चाह रही थी, वो तो पता नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे पहुंच गई। सर कोई सवाल है आपका? श्रद्धा से आप कुछ खास बात पूछना चाहते हैं? Yes, sir. All good, sir. Nothing special, anything. ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मुझे लगता है कि अब मैम हम कंपाइल करते हैं, आज हम रैप करते हैं हमारे सेशन को। और कोई मैसेज आप इस लाइफ स्पैन के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं गेस्टवाइट्स के लिए, या जो भी आपके अपने सेशन का सार, कुछ आप मैसेज दीजिएगा। फॉर श्योर कपल ऑफ थिंग्स, मे बी जैसा अगर इफ कहीं ना कहीं मैं किसी भी रूप में, बहुत छोटे से रूप में भी किसी की कहीं कुछ मदद कर सकती हूँ, आई एम ओपन फॉर दैट। रीच आउट टू मी। तुम मेरा ईमेल आईडी शेयर कर देना आगे के लिए। Not only you, not only Gesuites, but sometimes it can also be your kid, it can be someone else who needs just someone to speak. क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कुछ है, एक थोड़ा सा नज होता है, उससे जिंदगी काफी आसान हो जाती है। सो feel free for that. You can I'll be very fortunate and happy to whatever I can contribute. I would love to do that. I think a lot of questions went around on marketing, so और भी कुछ है तो for sure, but of course engineering as well. Engineering is not a degree for me. Engineering is the mindset. अभी आज्ञा ने देखा कि जब मैं कर रही थी, I was telling नहीं, इंजीनियरिंग एक दिमाग होता है कि आनंद आया है, दिमाग वैसे ही चलता है। मुझे कंपनी मिली है 2 दिन की 3 दिन की, जो आपके साथ कंपनी मिली है, जो कुछ आवर्स हमने कॉन्वर्सेशन किए हैं, तो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल थे। और डेफिनेटली मुझे लगता है मेरे साथियों के लिए भी ये बहुत इंस्पिरेशनल सेशन रहा होगा। और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगला हम आपसे एक सेशन और फिर कभी करना चाहेंगे, जिसमें हम मेंटल हेल्थ, एनर्जी हीलिंग और इस पर डिवोटेडली कर सकेंगे। तो फ्यूचर में आप कभी समय निकाल सके मैम, तो हम एक सेशन इसके लिए फिर से करेंगे।
जरूर जरूर. और I would love to see your session, Agya. I want to अरे know मैम what's happening in AI, how you have been there, and I know there's so many things. And how can we ever forget कि जितनी बार कई गाने जो आए उसमें तुम्हारी याद जरूर आती है. जो तुम कॉलेज में हमने कॉमन रूम, हमारा लेडीज मुझे रूम गेस्ट लड़कियों का गानों अलग से नहीं याद होता है. हाँ, मुझे yes, you जो are भी मिलता associated है with. हाँ माय प्लेजर. मैं समझ रही थी जब मैंने आपको पहली बार कॉल किया कि मुझे बताना पड़ेगा कि मैं वो आज्ञा, मैं वो, आपने इमीडिएटली बोला कि हाँ आज्ञा, तो आप जानते थे मुझे, आपको याद था, आज्ञा याद थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. माय प्लेजर. तो थैंक यू. Yeah, बहुत so अच्छा लगा. I think we wrapped the session, and here it is. All the Gesuites have that faith, have that belief. You're from Ujjain Engineering College. You're going to do fantastic. Have that faith. It may be the last session for the year as well. I'm not too sure, but from my side, yes. Many wishes to you, your family, your loved ones. Wishes of abundance of health, abundance of love, abundance of wealth, abundance of whatever your heart desires. So that's how it's going to be. Now, Agya, you have got one task. हम बोल रहे हैं अब तुम कुछ करके दिखाओ. Open your arms. Open your arms. Yes. How big it is? Now come back. Infinite. Yes. Yes. And say, you love Agya. Say, I love myself. I love myself. I love Agya, yeah. and I love you also, ma'am. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Have a great evening ahead, or morning ahead, or day ahead, and very importantly, celebrate life. Yeah, that's celebrate life. Yeah, celebrate life. Thank you all of you. Thank you, ma'am, for accepting. Thank you, this. audience. Thank you so thanks much. to the platform. Thank you, everyone. Yeah, very thanks to you and Thank Samvad you. team. Thank you very much. Thank you. Bye. Good night. Best wishes. Good night. Bye.